So today we'll start with understanding of data types. Okay. So yesterday we saw this slide, right? And I told you that integer is nothing but a data type. So what is a data type and how many data types we have in Java, that we'll discuss. So I'll create a separate class and I'll give the name as data types. Main method. So basically data types mean, or you can say it tells you what type of data we store. Okay, what type of data we store or we are storing. Okay, that is mentioned or told by data types. So say for example, if you want to store true or false Boolean type of value. Boolean value, when does it comes into picture? When you have like yes or no kind of thing. No? Just say price is greater than like some value. Price is greater than 20. Yes or no. Element is present or not. Right? Checkbox is ticked or not. So the answer is yes or no. Right? Database is having records or not. Right? Or it is empty. So wherever like the answer is yes or no, you will get the answer as true or false. Okay, true or false. So for storing true or false value, you have to have a variable having a data type as Boolean. Okay, so Boolean in small, and then I'll give the name as B, variable B. You can give any name, okay, B, and then I'll say. So this is you have declared, and initialized. Okay, declared and initialized. Right. So declaration basically means this way: Boolean, Boolean B1. This is declaration, only declaration. And initialization means if you are initializing a value or you are assigning a value to the variable, then it's called as initial. Okay, just and so this is declaration and initialization. Declaration basically means only this portion, and initialization means assigning a value. This applies to each and every variable object. Okay, initialize when anyone says initialize, you have not initialized, or you get an exception saying okay the value is not initialized, object is not initialized, that means it is not having any value assigned to it. Okay, now for variable naming, generally variable naming it starts with a small letter. You cannot keep number before the character. Okay, this is fine, b1 is fine, but 1b as in 1 is numeric, so that should not come before character. You can keep, I think, underscore. Underscore is also not allowed. Underscore is allowed in Python, I believe. Dollar, yeah, dollar is allowed. Dollar b, something like this is allowed. Rest other special characters are not allowed. Okay, you will get this kind of red line and this cross saying syntax error on token. Okay, but you can assign this way: b underscore at the rate, something like that. At the rate is not so, b underscore 1, say for example. So this is fine. Okay. But generally we give variable name based on like practical uh, reasons like price, quantity, okay, name, something like that. So those becomes our variable. And over here, if you can see, the entire portion data type is in small letters.
So this is called as a primitive data type. Okay, this is primitive data type. Primitive data types. Okay, primitive data types. Whereas you have non-primitive data types are also available. Non-primitive data types available. Now, in case of non-primitive data types, we have one thing called as wrapper classes. Okay, wrapper classes. So what are wrapper classes? So let's understand. So in that you will say B capital Boolean. I'll say B2 is equal to 2. So over here, this is nothing but a class. I told you, class name always starts with a capital letter. Right? So this is a class, non-primitive data type. Okay, it belongs to java.lang package. Java.lang is a package, Boolean is a class. So Boolean class, okay, if you read this portion, Boolean class wraps a value of the primitive type Boolean. मतलब Boolean primitive type Boolean की वैल्यू को रैप कर रहा है और स्टोर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट में. Okay, we'll understand about object later on, how to create an object, but right now you can just make a difference. This is a primitive type, this is a non-primitive type. And one more difference is that you can say b2 dot, then you should get access to all the methods of that particular class. So Boolean class, Boolean values there compared to, okay, equals, get class, all these methods are accessible by b2, but over here you won't be able to access because Boolean, small Boolean is not a class, so it does not have a method associated. इसमें मेथड आपको मिल जाएंगे, क्लास है तो मेथड्स हैं एक्सेसिबल. राइट, ये एक और डिफरेंस आपको याद. सो जितने भी हम प्रिमिटिव टाइप्स देखेंगे, whatever primitive types we are going to discuss, for each and every primitive data type there is a non-primitive data type available. Okay, so the next one is character, for storing character. So char c, I'll say, or you can say char gender equals single quotes male. So for storing character you need to have single quotes over there. Okay, सिंगल कोट्स में ही आपको रखना पड़ेगा और एक ही सिंगल कैरेक्टर ही आएगा. आप स्पेस नहीं रख सकते कि एम रखा और स्पेस दिया. दिस इज नॉट अलाउड. स्पेस इज अगेन अ कैरेक्टर, सो दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग. ओके, तो अगर आपको एक ही सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, वो कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका एस की वैल्यू रहेगा अवेलेबल. ओके, उसका एस की वैल्यू अवेलेबल रहेगा. एस की यू गाइज नो राइट, व्हाट इज एस की? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है ना, उसका एक न्यूमेरिक डिजिट रहेगा, वो असाइन रहेगा. तो आप कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, लेकिन सिंगल कैरेक्टर, स्पेस भी स्टोर कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड अप टू दिस पार्ट गाइस? समझ आया यहाँ पर? Yes. So this is one thing. And in case of what you say, declaration and initialization of variable, you if you have a variable which is of same type, जैसे अगर मुझे जैसे कैरेक्टर है और मुझे एक और कोई दूसरा कैरेक्टर भी लेना है, राइट, तो आई कैन जस्ट से c equals single quotes something like this. This is also perfectly fine. So यहाँ पे आपको c जो है वो कैरेक्टर टाइप का हो गया और उसकी वैल्यू हो गई है. अगर मुझे प्रिंट करना है तो आई विल जस्ट से sys out control space bar, value of c is then plus and then c, right? This is how we do. So यहाँ पे as it is print होगा डबल कोट्स में, प्लस यानी कॉन्केटेनेशन, और c जो है उसकी वैल्यू m जो है वो यहाँ पे प्रिंट होगा.
So let me run this. So this is printed. Okay, so if you have multiple variables of same data type, you can keep it in single line, comma separated. आपको इनिशियलाइज करना है नहीं करना है उस लाइन में डजंट मैटर, आप बाद में भी कर सकते हो। सी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया आपने और यहाँ पे आप जाके उसको इनिशियलाइज कर दे रहे हो। दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। ओके, and don't worry about these signs, these are nothing but warning signs. And what they say, that you have declared and initialized a variable but you have not used it in your program, so unnecessary you are wasting the memory. So that is what it is saying, the value of local variable b is not used. So don't worry about these warning signs. Okay, red cross आता है तो then it is an error, so you have to look for it. Clear up till this part, guys? Understood? Boolean and char we have discussed. Yes. So इसमें ही non-primitive data type क्या रहेगा? Character. Okay, character C1 I'll say. Single quotes. M say for example. Okay, this. So character is a class. Java.lang. जितने भी non-primitive data types हैं ये सारे आपके wrapper classes. They all belong to Java.lang package. The character class wraps a value of primitive type char in an object. ठीक है, इन सब का इतना यूज नहीं है हमें। ओके, सेलेनियम में वेब ड्राइवर में इतना यूज नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। चलो, नाउ कम्स अवर न्यूमेरिक पोर्शन। सो नॉन डेसिमल, आई वुड से नॉन डेसिमल इंटीजर वैल्यूज। ओके, नॉन डेसिमल इंटीजर वैल्यूज। तो देखो, मैक्सिमम हम लोग जो यूज करेंगे वो है इंटीजर, इंट है ना। आई विल से इंट एज इज इक्वल टू 20, राइट। तो मैक्सिमम तो आप ये इंट ही देखोगे, बट देन जावा इज गिविंग यू 4 ऑप्शंस। ओके, इट स्टार्ट्स विद बाइट। आई विल से बाइट by इज इक्वल टू 127। ओके, सो बाइट की और सभी जितने भी आप यहाँ पे डेटा टाइप्स देखोगे, ओके, उन सब की एक रेंज है। बाइट की रेंज जो है वो है 127 माइनस टू पॉजिटिव। अगर 128 दोगे तो वो आपको एरर थ्रो करेगा, सेइंग दैट टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बाइट। यानी वो 128 को इंटीजर कंसिडर कर रहा है और आप उसको बाइट में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब बड़ी वैल्यू है और छोटा कंटेनर है, छोटी मेमोरी साइज है, तो बड़ी वैल्यू छोटी मेमोरी साइज में स्टोर नहीं हो सकती। सो इट इज गिविंग यू टाइप मिसमैच। So two quick fixes available. Add cast to byte, या तो इसको टाइप कास्ट कर दो, इंटीजर को बाइट में कन्वर्ट कर दो, या फिर बाइट डेटा टाइप को ही चेंज कर दो इंटीजर में। 2 ऑप्शंस है। तो अगर मैं यहाँ पे कास्ट करता हूँ, आपको टाइप कास्ट भी बताते हैं व्हाट इज टाइप कास्ट। तो दिस इज हाउ वी टाइप कास्ट, यानी आपने 128 को कंप्रेस किया बाइट में ऑफिस स्टोर पे। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई थिंक नहीं आती है एज इट इज। हम प्रिंट करेंगे तो 128 तो नहीं आएगा, -120 है ना, अपोजिट, वहां से अपोजिट से वो स्टोर करते हैं। लेट मी ट्राई 130। सो इट इज गिविंग 126। सो माइनस से नेगेटिव से वो स्टार्ट हो रहा है। Probably let me say 2000 QC. So these kind of things you can try it out, okay, on your own. मैं आपको डेटा टाइप सिखा रहा हूँ, फाइन, बट एट योर लेवल यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, है ना। थोड़ा R&D इस तरह से आप कर सकते हो ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज उसकी मिल जाए। -48, so it is giving some random values. Okay, how it is calculating I don't know, but that is how it stores. If you typecast,
ओके, इफ यू टाइप कास्ट, और टाइप कास्ट में भी बड़े से छोटा करो, है ना, दैट। ठीक है, तो बाइट की जो रेंज है दैट इज -127 टू +127। तो बाइट आपको पता होगा, बाइट इज लाइक 8 बिट्स, राइट? वन बाइट इज 8 बिट्स, एंड वन बिट इज 0 या तो 1। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर में एक्सचेंज होता है वैल्यूज या इंफॉर्मेशन, दैट इज इन फॉर्म ऑफ 0 और 1, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। सो इन जो सबसे छोटा बोल सकते हैं पोर्शन, दैट इज 0 और 1। ऑन ऑफ ऐसे बोल सकते हैं, ऑन ऑफ, लाइट ऑन ऑफ होती है, उस तरह से इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 8 bits is 1 byte. Okay, so byte is there. Then you have short. Short की range भी I think 32,000 something कुछ है. You don't have to remember and worry about those things. Just ये मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ. So this value won't be able to still यहाँ पे इस तरह से इंटीजर की 64,000 या समथिंग कुछ है, और इसके बाद आता है लॉन्ग। लॉन्ग की काफ़ी बड़ी है, तो दिस इज आप लास्ट में एल भी लिख सकते हो। सो बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग ये इतना ज़्यादा यूज नहीं होगा। ओके, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे इंटीजर यूज हो रहा है। और इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, दैट बाइट और बाइट को आप एडिशन करोगे, उसकी वैल्यू तो बड़ी आएगी ऑटोमेटिकली। अगर बाइट में 127 है मैक्सिमम वैल्यू, और दूसरा एक वेरिएबल है उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू है 127, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो बाइट में तो स्टोर नहीं हो पाएगा। तो वो फिर आपको शॉर्ट या इंट या लॉन्ग उस हिसाब से स्टोर करना पड़ेगा, राइट? सो वो हम जब एडिशनल ऑपरेटर्स और सब देखेंगे, then I'll discuss it again. But those things also you have to take care. So these data types are based on the storage capacity, है ना, मैक्सिमम वैल्यूज कितने स्टोर कर सकते हैं। You can take the help of ChatGPT, and you can say primitive non-decimal data type values range. So, sorry, I forgot to write in Java. Probably it will give Java. Java C# में दिया है, but यहाँ पे दे दिया देखो, byte, short, int, long. Okay. Don't worry about all these things. Okay, this is for Java. These are for C, C++. Don't worry about these things. इतना है. Okay. So integer is also having a very big capacity. ये 32,000 है. Okay. And ये 64 नहीं है, this is something beyond. और ये तो काफ़ी बड़ा है. तो इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, एंड आई डोंट थिंक सो हमारे डेली यूजेज में इतनी वैल्यू हम स्टोर करेंगे, इतनी बड़ी वैल्यू। तो लॉन्ग का इतनी ज़रूरत नहीं है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इंटीजर टाइप, बट अगर आप मेमोरी सेवी हो, अगर आपको मेमोरी बचाना है, कंट्रोल करके चलना है, देन यू कैन कंसिडर शॉर्ट ऑल्सो, बट उतना हम ध्यान नहीं देते। वी जनरली गो विद इंट। ओके, so that is how you can take the help of ChatGPT, and you can learn or create your own understanding. Now comes decimal integer values. So any question, guys? No. No. Decimal integer values. So decimal में we know that it's like point आ जाता है, तो we have float and double. Again ये सभी जितने भी मैं
बता रहा हूँ प्रिमिटिव, उन सबके नॉन प्रिमिटिव भी रहेंगे, बट अभी मैं सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो फ्लोट एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं आपको फ्लोट और डबल का बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप फ्लोट में वैल्यू स्टोर करोगे, अगर आपने यहाँ पे लास्ट में एफ नहीं लिखा, तो इट इज गोइंग टू गिव यू एन एरर। Okay, it is going to give you an error saying that ki, okay, this is a double value and you are trying to store it in a float. So by default Java जो भी डेसिमल वैल्यू आप लिखोगे वो डबल ही कंसिडर करता है, right? और अगर आपने डेटा टाइप फ्लोट रखा है तो वो आपको कहेगा कि इट्स टाइप मिसमैच। तो ईदर यू कन्वर्ट इट टू डेटा टाइप टू डबल, या तो फिर आप टाइप कास्ट कर दो फ्लोट में। तो दो तरीके टाइप कास्ट करने के, या तो आप लास्ट में एफ लिख दो, जैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग में एल लिखा था लास्ट में, एल लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे एफ लिखना है आपको लास्ट में, या तो फिर आप यहाँ पे फ्लोट लिख दो। ओके, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन एंड दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, बट इट्स नॉट द केस ओवर हियर, है ना। यहाँ पे अगर मैं 128 लिखता हूँ और आई करूँगा तो ऐसा नहीं होता है, और फिर बी करूँगा तो ऐसा नहीं होता कि बाइट का बी है, राइट? दैट इज नॉट द केस। ओके, तो ये टाइप कास्ट में सिर्फ लॉन्ग में यहाँ पे और फ्लोट में ये एफ और एल इज फाइन। ओके, दिस इज वन डिफरेंस। ओके, दिस इज वन डिफरेंस। अनदर डिफरेंस आई विल एक्सप्लेन इज प्रिसिशन। ओके, अनदर डिफरेंस इज प्रिसिशन। सो प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज वैल्यू, है ना। आपको कहाँ तक प्रिसाइज वैल्यू चाहिए? जैसे डेसिमल के बाद तो इतनी सारी वैल्यू है दोनों में, राइट? और ऐड कर देता हूँ द सेम वैल्यू, दोनों में सेम वैल्यूज है। ओके, नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, जस्ट ऑब्जर्व फ्लोट में कितनी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो रही है और डबल में कितने प्रिंट। तो डबल में आपको हाई प्रिसिशन मिल रहा है ना, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिल रही है। प्रिसाइज मतलब आप डेसिमल वैल्यू में और ज्यादा डेप्थ में आप एंटर हो सकते हो। यू आर गेटिंग मोर प्रिसाइज वैल्यूज इन डबल, लेस प्रिसाइज इन फ्लोट। बट आई बिलीव हमारे जो डेली कैलकुलेशंस होंगे, अगर कोई आपकी वेबसाइट है, ओके, उसमें दिस मच इज ऑल्सो फाइन। ये आपको डेसिमल के बाद 3 3 6 7 7 वैल्यू स्टोर करके देगा। एक्चुअली इन टोटल 8 है। अगर यहाँ मैं डेसिमल यहाँ पे हटा के ये भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं 123 के पास देता हूँ, नाउ इफ आई रन दिस, सी, वो टोटल 8 ही देगा आपको, है ना। अब आपको डेसिमल के बाद कितनी मिली? 3 and 2 5। तो ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद टोटल 7 मिलेगी, इन टोटल आपको 8 वैल्यूज ही प्रिंट करके देगा। और इन टोटल यहाँ पे शायद 15 या 16 ऐसा कुछ है। 3 6 9 12 15 16 17 वैल्यू, टोटल 17 वैल्यू विल बी प्रिंटेड। डेसिमल कहीं पे भी हो, टोटल 17 वैल्यूज विल बी प्रिंटेड। यहाँ पे आपको टोटल 8 वैल्यूज विल बी प्रिंटेड। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, Yes. राइट? सो यहाँ पे ये डेटा टाइप्स है, बूलियन, कैर, boolean is for storing boolean values true and false, and in case of java, true is not 0 or true is not 1, false is not 0 or 1, है ना। सी प्लस में, पाइथन में, आई थिंक पाइथन में है कि ट्रू
is like is considered 0, sorry 1 and false को 0 consider कर लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ट्रू ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स, वैल्यू वही होगी. सो बुलियन इज फॉर स्टोरिंग ट्रू फॉल्स. ये बुलियन मैंने बताया ना, कभी भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन जहां पे भी होगा वहां पे बुलियन आएगा. इज एलिमेंट प्रेजेंट, इज चेकबॉक्स टिक, है ना, फिर ऑब्जेक्ट इज नल और नॉट, समथिंग लाइक. char is for storing single character. नॉन डेसिमल वैल्यूज जनरली आपके इंटीजर वैल्यूज कैलकुलेशन के लिए, और मैक्सिमम हम इंट यूज करेंगे, डेसिमल में फ्लोट है. ओके, सो दीज आर योर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. नॉन प्रिमिटिव में सेम सभी को आप कंसिडर कर लोगे तो नॉन प्रिमिटिव हो जाएंगे रैपर क्लासेस. रैपर क्लासेस के अलावा यू हैव स्ट्रिंग क्लास, यू हैव एरेज, enums, all those things are also part of your non primitive data types. Okay, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको स्ट्रिंग क्लास बता रहा हूँ बिकॉज हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. तो स्ट्रिंग s इज इक्वल टू डबल कोट्स टेस्टिंग is, ओके, समथिंग लाइक. स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में आएगा एंड स्ट्रिंग इज अ क्लास. ओके, स्ट्रिंग इज अ क्लास, string is a class. Just mouse. Just a minute, yes. The string over is a class. Actually, my mouse is cursor went away, so I'm not able to show you. Let me see. Sure. Anyways, if you when you try to do this program, what you can do is you can mouse over on string. Okay. So in that case, you will be able to see the java.lang string class. So string is a class, and again you will be able to see the methods associated with it, like s dot. All these are methods of string class. Okay. अगर ये इस तरह से चला भी जाता है ना, जैसे ये आपको ऑप्शन आया डॉट के बाद, डॉट के बाद ये ऑप्शन आएगा, तो अगर ये चला भी जाता है तो आप देखो ये है, ये चला गया. अगर ये चला जाता है तो आप कंट्रोल स्पेस बार से वापस इसे लेके आ सकते हैं. ओके, सो कंट्रोल स्पेस बार इज यूज्ड एट मेनी प्लेसेस. ठीक है. देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस पार्ट लाइक स्ट्रिंग. जनरली हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, बिकॉज स्ट्रिंग इज अ क्लास, वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरह से बनता है. ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरह से बनता है. तो न्यू इज नथिंग बट अ कीवर्ड. Okay, what new says? Allocate a memory. Okay, allocate a memory of type string and store the value testing is fun in it. So ये जितना मैंने हाईलाइट किया है, that is nothing but a object, creation of an object. जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे किसी भी क्लास का, हमेशा न्यू से ही स्टार्ट होगा. और ऑब्जेक्ट एक्चुअली S1 नहीं है, ऑब्जेक्ट ये है. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. This is creating your object. S1 is a reference variable. S1 is a reference variable जिसमें आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टोर कर रहे हो या फिर मेमोरी के रेफरेंस
लाइंस को स्टोर कर रहे हो, है ना। ये आपको एक नया मेमोरी एलोकेट करके दे रहा है, दिस लाइन इज एलोकेटिंग अ मेमोरी टू यू, एंड उसमें वैल्यू स्टोर हुई है टेस्टिंग इज फन। और वो जो मेमोरी की वैल्यू है वो S1 में स्टोर हो रही है, तो S1 इज पॉइंटिंग टू दैट मेमोरी, सो S1 इज कॉल्ड एज रेफरेंस वेरिएबल। लेकिन हम लोग डेली यूसेज में इस तरह से बोलते हैं कि भाई S1 इज ए ऑब्जेक्ट, दैट इज फाइन, वो समझ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप कंसेप्चुअल वे में जाओगे या रियल टर्म्स में, तो S1 is a reference variable. Okay, and maximum time we will be defining string class this way. Okay, but this is also possible. This is also fine. ये जो second line लिखे, this is also fine. Okay. So we'll complete up till this part only. Okay. Data types ही आज हम discuss करते हैं. We'll move slowly and gradually only because तब तक आप comfortable हो जाओगे. So what you guys can do is you can do practice of this.